Okay, guys, so let's start. Anyone has any question? I got one question offline. Still थोड़ा सा confusion है कि वो portal क्या है या account बनाना पड़ता है. So anyone has any questions related to this part which we covered? Okay, how to access Azure portal and why do we require a portal? अब तक जितना हम बात करते हैं कि Azure से हम सर्विसेज रेंट पे लेने वाले हैं, ये सब करने वाले हैं. So I'm sure you understand, you guys understand कि कोई भी चीज जो है आप ये करते हो, यूज करते हो, उसमें आप लोगों को एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, राइट? अकाउंट बनाना पड़ता है. सो इसी तरह Azure पे भी if you are planning to take something on credit on rent, तो you will have to create your account once. How else will they know you कि कौन इसको रेंट पे मांग रहा है? So you will have to create your account. तो अकाउंट बनाना हम अभी सीखेंगे. एंड वंस यू क्रिएट योर अकाउंट यू विल हैव टू हैंडल योर अकाउंट. उसी अकाउंट में जाकर आपको कभी वर्चुअल मशीन किराए पे लेनी है, कभी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम रेंट पे लेना है, कभी पूरी की पूरी सर्विस आपको रेंट पे लेनी है. व्हाटएवर यू हैव टू डू, यू विल हैव टू गो थ्रू योर अकाउंट. इज इट क्लियर कि व्हाई डू वी रिक्वायर्ड एन अकाउंट ऑन Azure? Yes. Yeah. एनीथिंग, बी इट नेटफ्लिक्स, अमेजॉन वगैरह, कुछ भी हो, यू रिक्वायर योर अकाउंट. फेसबुक हो, कुछ भी हो, आप लोगों को एक अकाउंट आपका लगेगा ना वहां पर. एक अकाउंट यू विल रिक्वायर ओवर देयर. तभी जाके आप वहां पर उस अकाउंट में अपने लॉगिन कर सकते हो, चीजें ये कर सकते हो. लेट्स से कोई मूवी है आप रेंट पे लेना चाहते हो, कोई ऐसे साइट जो मूवी रेंट पे देता है, तो आपको एक अकाउंट उस पर बनाना पड़ेगा, राइट? तभी वहां पर एक आपकी लॉजिकल बाउंड्री जो है डिस्क्राइब होगी. लेट मी ओपन वन paint and I hope this is clear for most of you, but still जिसके लिए नहीं clear है we'll cover it once. So let's say this is my Azure. पूरा जितना भी Azure का पूरी दुनिया में जितना भी इसका presence है ये है, ठीक है. And they have बहुत सारे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सर्विसेज एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं इनके पास रेंट पे देने के लिए. पार्शल रेंट, फुल रेंट, व्हाटएवर, ये सपोज सर्विसेज है, ठीक है. नाउ आई वांट टू टेक दिस ऑन रेंट. आई कैनॉट सिंपली गो हियर और कुछ भी कैसे भी रेंट पे ले सकता हूँ. फर्स्ट द मोमेंट आई गो हियर टू Azure portal, they will ask me who are you, right? I will have to present myself. अपनी आइडेंटिटी देनी पड़ेगी कि this is the person I am. ये मेरा आई कार्ड और ये मेरा कुछ चीजें हैं और ये मे बी ये मेरी कंपनी का नाम है. I will have to present something. I'll have to create my own identity, right? उसके पोर्टल पे मुझको अपनी आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी. So now on Azure's portal, I have my identity named Tsoft. और in this case I can call it domain also. ये मेरा डोमेन बन गया इसके ऊपर. Azure के पोर्टल पे मेरा एक डोमेन बन गया Tsoft. Same someone else could have. यहाँ पर किसी और का भी हो सकता है, ठीक है. Let's say TCS. इसी तरह से बहुत सारे ये हो गए. And now if I want to take something on rent, I want to ask something on rent, Azure will know who is asking. Okay, Tsoft is asking one server hardware for rent, one operating system platform as a rent, one software as a rent. ये सब पता है उसको. तो यहाँ से इसके थ्रू मैं यूज कर रहा हूँ. So ये सब कंट्रोल करने के लिए I should have my account on Azure portal. And how can I control that account? I can directly log into this portal on the internet or a browser. I can access this or I can use it using PowerShell. यहाँ से भी मैं कनेक्ट करूंगा तो अल्टीमेटली मेरी कनेक्टिविटी इसमें ही होने वाली है. And then I will control it that I want one hardware on rent, I want one software on rent, whatever it is. Is it clear, guys? यहाँ तक clear है कि why do we need an account? Yes. ओके, अब कौन कौन sir, सी ma'am. सर्विसेज है, वी वर जस्ट रीडिंग कौन कौन सी सर्विसेज है. बेसिक्स देख रहे हैं हम लोग, बाकी हर सर्विस को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं जो हमारे रिक्वायरमेंट की हो. वेरेवर यू आर ट्राइंग फॉर Azure एडमिनिस्ट्रेटर, उसके लिए जो भी सर्विसेज काम की होती है, वी आर गोइंग टू रीड दैट. सो वी हैव आइडेंटिटी. आइडेंटिटी मैंने बता दिया ऑलरेडी कि क्या है. जो Azure एक्टिव डायरेक्टरी जो हम लोगों ने देखा उसी का ये है. सपोज कंप्यूट, कंप्यूट में क्या आएगा? कंप्यूट में आएगा आपका वर्चुअल मशीन्स. आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह है वो वर्चुअल मशीन्स है, वो कंप्यूट में आएगी. देन नेटवर्किंग है, स्टोरेज है, डेटाबेसेस है, एनालिटिकल सॉफ्टवेयर है जो कल मैं बता रहा था, AI/ML है जैसे ट्रांसफर ट्रांसलेट वाला सॉफ्टवेयर है. तो ये इसका यूज कैटेगरी है विच वी ऑलरेडी सॉ. फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ. all services,
ये देखो, ये जनरल सर्विस में इतना सब है। कंप्यूट में क्या क्या आता है? वर्चुअल मशीन क्लासिक, वर्चुअल मशीन स्केल सेट। अब ये सब क्या है स्केल सेट वगैरह, विल सी दैट। वर्चुअल मशीन के डिस्क, ऑपरेटिंग सिस्टम का इमेज, फंक्शन ऐप, ये सब आ रहा है आपका कंप्यूट में। नेटवर्किंग में क्या आ रहा है आपका? वर्चुअल नेटवर्क्स, विल सी दैट कि वर्चुअल नेटवर्क क्या है, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, लोड बैलेंसर, ये सब आपका आ रहा है नेटवर्किंग में। तो दीज आर दी सर्विसेज अवेलेबल ऑन Azure. Is it clear? Yes. Okay. Now let's see how to create an account on Azure. Whoever wants to create that, they can do it with me. फिलहाल आपसे कोई वो पैसा नहीं मांग रहा है, so let's cancel this. Let me sign out. So this is the first time I'm planning to acquire Azure. I'm planning to go to Azure. ठीक है, so this is the page I will see. यहाँ पर if I have an account, I could sign in, but I'm saying कि I'm new to Azure. I'll click here. ठीक है, start for free. Or though I'm new to Azure, but I have seen my colleague working on Azure. I have seen my other companies working on Azure, and I'm pretty sure about it that I do not want anything free. I will directly go for pay as you go, and I'll start using them and I'll start paying. I could use here. Or if I want to use free service, I could click start free. With the above account, I already have one account, so I will not be using that. You could do the same here. Okay, you could create a new account. So I think I already have plenty of accounts here. Let's try with the phone number. I'm waiting for the code. Okay, I just got it. Now it requires an email address. You guys can try if you want. You can also try. यहाँ पर आप अपना same यहाँ पर जाके try कर सकते हो. And if you face any problem, you can let me know. So maybe at least you will have an account by end of this session. सोहेल भाई, जो डॉक्यूमेंट है आपके पास वन नोट, वो ड्राइव में नहीं है अवेलेबल, राइट? है ना? जो डिस्क्रिप्शन में है वही ड्राइव में? हाँ.
वहां पर 2 ड्राइव्स हैं, और सॉरी 2 लिंक्स है। एक है आपका ग्रुप इनविटेशन, दूसरा है गूगल ड्राइव के लिए। व्हेन यू गो टू गूगल ड्राइव दे, ओके, सो दिस इज हाउ इट लुक्स। इस तरह से आपको सिक्योरिटी कोड आएगा एक। We'll try to go to portal now. Let's see. अकाउंट हमारा बन गया है। We'll see if we are able to log in now. Is anyone with me? They're trying to log in or creating their account. Yeah, I created just now. बन गया आपका? हाँ. But ये मेरा कंपनी का आईडी है by default. नहीं, कंपनी के इससे मत लो आप। वो आई थिंक लॉग इन कर रहा है डायरेक्टली, इसलिए कंपनी के इस पे जा रहा है। सो डोंट टेक योर हाँ. कंपनीज आईडी। Make sure that you sign out and then you create it from your personal account. Different account. Okay. This account is created, guys. Let me know who else is trying. If they are done, let me know. इसका नेक्स्ट चीज मैं बताता हूँ देन आप लोगों को कि सब्सक्रिप्शन कैसे होगा। First, any questions do you guys have till here? And meanwhile, anyone else who's trying to create or I got few messages that they have created already. Anyone else who's still working on this before we move ahead? Okay, so I see one has been created, one is creating. Anyone else trying to create? Or any questions what we discussed here? Okay, I think few of you have created, so let's not wait more. ठीक है guys, यहाँ तक clear है? Because next topic I'm not topic exactly, इसी से जुड़ा हुआ subscription I am planning to explain. So before I start that, I just need to know one more time. I'm asking. We waited for 2 minutes. I got few messages here. A few of them you created. A few of them are trying. Anyone else who's trying, who wants to understand this again? किसी का भी कोई भी doubt है यहाँ तक? For these topics, what is Azure portal? How do we access it? How do we create an account? Why are we creating an account? कोई भी question है किसी के mind में कुछ भी? No, sir. Okay, so this is the account I have created. Fine. I have created an account with Azure, and I am a tenant now on Azure. I am a tenant. Whenever I say a tenant, a domain, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, और कंपनी। टेनेंट का मतलब क्या हुआ, ये जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ये Azure का अपना ऑरा है, Azure का अपना ये जितना कुछ है सब कुछ Azure का ही है। इस पे what I have created my identity, this is known as tenant. So don't forget this term, आगे बहुत बार काम में आने वाला है। So this is called my tenant,
or my domain or my company. My company's virtual representation on Azure. That is what a tenant is. Yes, guys, any questions? I'm going very slow today because I do not want you to miss on here. Where is it asking PAN ID? Someone messaged me that it is asking PAN ID. So on which window or on which stage it is asking PAN ID? Or let me explain. Just hold on. I will come to that page and then it will be answered. So did you guys understand what is tenant? A tenant is nothing but my company's logical representation or my presence on Azure. It is called tenant. जैसे अब मैं अपना जो ये बता रहा था, जो न्यू हम लोगों ने बनाया है, so T-Soft Info Solution ये जो है इसका tenant हो गया यहाँ पर Azure पे, ठीक है. in my case जो मेरा already existing बना हुआ है, उसका भी कुछ ऐसा ही नाम है, थोड़ा बहुत change करके मैंने ये कर दिया है. उसका भी जो है वो भी एक जो है tenant हो गया यहाँ पर, ठीक है. This one, if I log in with this one, this is tenant. Okay. Now let's talk about a subscription. One thing, just because I have a tenant here, let me open one more portal of Azure and you will understand the difference. At the left side, I mean not sure आपका left कौन सा दिख रहा होगा, but this side, this is our newly created Azure account, and at the right side, I am logging into my existing account. Difference देखने के लिए. ओके, तो ये जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है, ये है आपका न्यूली क्रिएटेड अकाउंट. यू हैव जस्ट लॉग्ड इनटू Azure and this is my existing account जिस पे मैं काम करते आ रहा था. So here if I am planning to take a virtual machine, एक न्यू वर्चुअल मशीन बनाना है मुझको, मैंने Azure लिया है इसलिए कि एक मुझको सर्वर चाहिए था, एक वर्चुअल मशीन बनानी थी. So in my existing one, if I click, it will take me to the next one to create a new virtual machine, और simultaneously मेरे existing virtual machine पे बता रहा है. But here if I click on this one, जो मेरा newly created है, see what error it gives. Now what does it say? It says that you are already in, you are logged into Azure, but you do not have a subscription. To create something for billing purpose, you need a subscription. So let me explain this to you on Paint again, and then we'll create a subscription here. Is this clear to you? इसमें tenant क्या है, clear है आप लोगों के लिए? Yes. Yes. Tenant will also known as Active Directory or my company. ठीक है. And then we have subscription. Ignore the spelling, guys. Or it could be subscriptions. You could have multiple subscriptions. And then we have resource groups, और उसके बाद होगी resource. So let me highlight this first or create a diagram for you.
ये सब Azure के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। लेट्स से यू आर ऑलरेडी इन Azure, ये Azure को रिप्रेजेंट कर रहा है, सपोज ये सर्कल, आउटर सर्कल, दिस इज Azure Cloud, this is Cloud. Under Cloud I will have my tenant or my Active Directory. Sorry, it is I'm not sure what happened today, थोड़ा सा hang हो रहा है वो, so I can't even move anything. जैसे ही वो hang हो जाता है, I have no other option other than waiting. So this is my Active Directory. I'm not writing because I'm representing it from color. Then we have subscription, and then we have resource groups. Under resource groups we could have multiple resources. We'll see that उस पे आते हैं हम लोग. First let me explain this to you. And this is just one company I'm representing. ऐसे बहुत सारे हो गए, ठीक है, thousands में होते हैं. So this is Azure Cloud. Azure Cloud में जैसे ही आप आते हो, सबसे first step आपका होगा that you will require an Active Directory, you will require a company, or you will require a tenant to get an entry in Cloud, which we have already done. यहाँ पर हम लोगों को हमारा एक tenant मिल गया है. This is our tenant. tsoftinfosolutions@gmail.com के साथ हम लोगों ने एक टेनेंट हमारा ले लिया है. If I go here and I check for Active Directory, Azure Active Directory here, you will see I have Azure Active Directory. You will see I have users. तो sufficient access नहीं है अभी तक, that is a different thing, we'll come to that. But you see I have users, I have groups, ये सारी details मेरे पास है, ठीक है. All this information I have. अब तक मैंने कोई सब्सक्रिप्शन परचेस नहीं किया है, बट एक्टिव डायरेक्टरी मिलते ही मुझको ये सारा एक्सेस मिल गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज अ सब्सक्रिप्शन. नाउ व्हाट इज अ सब्सक्रिप्शन? सब्सक्रिप्शन इज समथिंग जो आपके बिलिंग के लिए काम में आता है. अब यूजर बनाने का मुझको कोई बिलिंग नहीं लगने वाला है, ठीक है. यूजर्स बनाने का, यूजर्स में ग्रुप्स बनाने का, उसको एक्सेस देने का, इन सब का मुझको कोई बिलिंग नहीं लगने वाला है. इसलिए जैसे ही ये आ जाता है, एक्टिव डायरेक्टरी या टेनेंट आपका आता है, आप लोगों को ये फीचर्स ऑलरेडी मिल रहे हैं. यूजर्स बनाने वाले फीचर्स मिल रहे हैं. बट इवन इफ यू हैव अ यूजर, you cannot do anything, you cannot create any account or anything, any resource here. The moment I clicked on virtual machine, see, if I click on virtual machine, what does it say? That you do not have a subscription. Now what is a subscription? एक्टिव डायरेक्टरी के इसको अंडर भी नहीं बोल सकते, उसके बाहर भी नहीं, ये पैरेलल होता है. सपोज एक सब्सक्रिप्शन, ये आपकी कंपनी के अंडर यू विल हैव टू टेक योर सब्सक्रिप्शंस, जिसके अंदर आप रिसोर्स ग्रुप और रिसोर्सेज बना सको. तो सब्सक्रिप्शंस क्यों होते हैं? इट कुड बी for multiple departments. Let's say that I have a shipping department, I have a textile department, I have some other department. So I do not want कि वो सबका सब एक ही बैनर के अंदर आ जाए और सबका बिलिंग एक हो. और I don't even come to know कि कोई एक्सपेंड कितना कर रहा है, कोई अपना सर्विसेज को एक्सपांड कितना कर रहा है, कोई पैसे कितने खर्चा कर रहा है और कोई कमाकर कितना ला कर दे रहा है. What I will have a single bill. I do not want that. So I will have separate subscriptions in Azure under my tenant. So this is tenant. Under my tenant I will have different subscriptions. So let's say this is my, or it could be regional based, कि ये मेरे पुणे ऑफिस का सब्सक्रिप्शन है. ठीक है, this is my Pune office subscription. So I could only start creating resources once I have any subscription. Similarly, I could have for Bombay office, I could have for Chennai office, or I could segregate it based on division. This is for production, this is for development, this is for testing purpose. किसी भी बेस पे उसका कोई सेट रूल नहीं है, जैसे भी आपको चाहिए आप इसमें ये कर सकते हो. But only once I have my subscription, I will be able to create any resource groups or resources. Now, what is resource groups? I will come to that. But till here, is it clear? Active Directory and subscription, is it clear? Yeah. Okay. Active Directory is Yes. nothing but just a database जहाँ पे आप लोगों के users होंगे, groups वगैरह होंगे. Just because you have access, you are there in Active Directory, that does not mean you have access on subscriptions.
सब्सक्रिप्शन वगैरह पे एक्सेस हम लोगों को अलग से देने पड़ेंगे। एक्टिव डायरेक्टरी जो है ना, ये एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर्स जो है, इट इज जस्ट टू गेट एंट्री इनटू क्लाउड, बस उतने ही काम के हैं। रेस्ट सब्सक्रिप्शन पे कैसे एक्सेस देना है, वी विल सी दैट, बट इज इट क्लियर एज ऑफ नाउ कि ये सब क्या है? Yes. Yes, sir. Anyone who has confusion? किसी को कोई भी confusion है, they can ping me or you can just raise your hand or tell me. Because if you don't understand in a concept of subscription and active directory and resource group, तो आगे बहुत सारे resources नहीं समझ में आएंगे। Okay, so now let's see how to get a subscription, because without subscription you cannot do anything. And again, who has created this portal, they can try purchasing a subscription from here. So you'll have to click for a subscription, click on start. And here it will ask your country, your name, middle name, optional last name, your email address, your phone number, and your organization name. Again, it is optional. PAN card, it is mandatory nowadays. It wasn't, now it is, I think. Or maybe you can try some dummy PAN card. Why is it mandatory? Because one person, they are creating multiple accounts. So keep that uniqueness that you are getting it only for one time. They have given this PAN card option. So type in your PAN card, your state and everything, click on next, and you will get a credit card information. You'll have to type, I cannot do that because I've already used my PAN card. Okay, you'll have to type in your information, credit card information. It will charge you 1 or 2 rupees. That will be credited back, and then you will have this 13,000 rupees credited in your account. Once you do that, you will see your account something like this. Let me open my account now. I've just approved the request. I'm just trying to show you how it looks once you have a subscription. So here, if I go and click on my subscriptions, don't get confused if you see multiple subscriptions, कुछ भी ऐसा दिख रहा है, so don't get confused. As of now, ये जो free trial था ना, वो 1 महीने के बाद you can convert it to pay as you go. अपने आप नहीं होता है, don't worry. I show it to you कौन सा एक बटन है जिस पे क्लिक नहीं करना है आप लोगों को. So it will not charge. अगर आपने ज्यादा यूज भी कर लिया तो आपके सर्विसेज बंद कर देगा वो. It won't charge. This is about to finish. We will not extend. So we'll try to finish the subscription वाला part as of now. So these are the subscriptions I have. When you log in, you will get an option to buy a subscription. You purchase a subscription, and once you purchase a subscription, then we will get an option to start creating these resources, like you can create a virtual machine and etc. So subscription पे भी access आप कैसे दे सकते हो? You'll have to come here in the subscription, and you will have to come here, access management, and here you will have an option to add your users. You could as an administrator, you could use an owner, a contributor, a reader. कौन क्या कर सकता है उसके सारे information यहाँ पर है. And understand one thing, this is a information or access get inherited. If I have a user who is an owner on this subscription, that will by default become an owner on this resource group, on this resource group, and on this resource group, and it will by default become an owner. These are resource groups, so resource groups में भी वो owner होगा, और उसके नीचे जो resources बनेंगे virtual machine, उसका भी अपने आप owner होगा. If someone is owner on the subscription, do not get confused with active directory. Active directory में users होते हैं, वो यूजर सिर्फ काम में आते हैं लॉगिन करने के, एंड दैट इज अ डेटाबेस ऑफ यूजर्स.
वही यूजर्स यहाँ पर काम में आएंगे, बट एक्टिव डायरेक्टरी पे सब्सक्रिप्शन का एक्सेस नहीं ग्रांट होता है, सब्सक्रिप्शन का एक्सेस सब्सक्रिप्शन पे आकर ही ग्रांट होता है। सो एक्टिव डायरेक्टरी एंड सब्सक्रिप्शन वगैरह ये पैरेलल में चलते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी में यूजर्स बनेंगे, दोस यूजर्स विल बी एबल टू लॉग इन टू पोर्टल, उन यूजर्स का एक्सेस वहां पर ये किया जाएगा, बट उनका सब्सक्रिप्शन पे किस लेवल का एक्सेस है दैट यू कैन कंट्रोल ओनली एट सब्सक्रिप्शन लेवल। उसके आगे ग्रैन्युलर एक्सेस और होता है, किसी रिसोर्स ग्रुप पे देना है सिर्फ एक्सेस, तो यू कैन डू दैट आल्सो, विल सी दैट लेटर। बट इज इट क्लियर एज ऑफ नाउ? टिल नाउ इट इज क्लियर? Yes, Olu. And I have got Yes. one message that Active Directory, they're not getting Active Directory, and वो जब मैंने फिजिकल एक्टिव डायरेक्टरी बताया था तब भी समझ में नहीं आया था। सो व्हाट विल डू, आज तो 7 मिनट रहेगी, एक्टिव डायरेक्टरी समझने के लिए टाइम नहीं है। सो टुमारो विल स्टार्ट विद एक्टिव डायरेक्टरी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, जिसमें अगेन हम ऑन प्रीमाइसेस वाली एक्टिव डायरेक्टरी देखेंगे और हम अपने Azure पोर्टल की भी एक्टिव डायरेक्टरी देखेंगे। सो वी हैव 7 मिनट्स हियर। Meanwhile, anyone who was able to create this account successfully, जिसका हम सब्सक्रिप्शन परचेज करके देख सकते हैं, anyone is ready with their account जो पोर्टल पे लॉगिन हो गया हो सक्सेसफुली? Okay, so Sonam has created. Sonam, could you share your screen? I'll stop sharing my screen. Is it possible to share your screen? Yes. Okay, so I'll stop sharing my screen and you could start sharing your screen, please. Okay, so now we are looking at Sonam's screen. I think she has already taken the subscription. Have you already taken the subscription, Sonam? It asked me to pay two rupees and then do something before I will enter you. ठीक है, I was hoping कि ये नहीं किया होता तो हम लोग बताते थे। Okay, by the way, this is the button to upgrade. Let me get the annotation. It will be easier for you to understand then. Here, yes, this is the button. Make sure you do not upgrade it. Once you upgrade it, it will start charging you. Click on that. Okay. And this is what you see. ऐसा भी नहीं है कि क्लिक करते ही वो चार्ज कर देगा. See, this is how you and you'll have to type in your PAN ID and upgrade, and then it will get upgraded. Once you upgrade, उसका क्या मतलब होगा कि then आपको monthly billing start हो जाएगा. And now, could you click on home button? No, click here, home. Click on subscription. So now if you see, Sonam has got her own directory. She has her own tenant. This is her tenant. And under tenant, she has her active directory. Active directory भी हम लोग देखते हैं. फिलहाल, she has one subscription. So let's look at that subscription. This is the subscription. This is free trial. Click on this, Sonam. Okay. Before I go to this IAM access management वगैरह, इसको हम will try tomorrow. Before that, let's see कि आप billing कहाँ से देख सकते हो. So click here on cost analysis. Very important thing, सबसे major चीज ये है, इसलिए सबसे पहले इसको मैं बता रहा हूँ. Okay, so this is the place. अब वैसे ही कोई खास मिलने नहीं वाला because she has recently taken this. Could you click on this notification icon, Sonam? Okay, now she has got a credit of 14,500 rupees and it is available for 30 days. If she doesn't use it in these 30 days, it will be lapsed. How could you use this? अब हम जो भी resources बनाने जाएंगे, could you click here on search window or could you click on home button or search anything and click on virtual machine. Let's say now she plans close this one from here, close this window. Okay, it's done. It's done. Now click on create virtual machine. First option. See, this is the subscription. Click on the drop down. No, subscription, not resource group, subscription. अभी हम नहीं बनाकर देख रहे कुछ भी. We'll see that day after tomorrow. कल का टाइम हमारा एक्टिव डायरेक्टरी में चला जाएगा. So if I had multiple subscription like Pune office, Mumbai office, Bangalore office, so I will see them. So if as a deployment engineer, when you get a request कि यार हमको 4 virtual machines चाहिए, so you will get this information कि किस subscription के अंडर चाहिए आप लोगों को 4 machines. So accordingly you will select that.
सब्सक्रिप्शन इज नथिंग अ मेथड ऑफ बिलिंग, ताकि मैं नहीं चाहता हूँ कि सारी कंपनी का बिल एक साथ आए. आई शुड नो कि इस सेंटर में कितना खर्चा हो रहा है, वहां पर कितना खर्चा हो रहा है. इज इट क्लियर? Yes. Okay, so guys, try to create your account and try to have this subscription with you. और don't do everyone सब मत करना, क्योंकि ये 14,000 खत्म होते नहीं है. So what we'll do, एक दूसरे के अकाउंट पे हम एक्सेस देते रहेंगे. As of now, I think 2 अकाउंट sufficient हो गए. We have already got 1 account. Sonam has created 1 account. Could one of you create 1 more account? और ग्रुप पे मैसेज कर देना जो भी सबसे पहले अकाउंट बना देगा, that I have created 1 account. So तीसरा अकाउंट मत बनाओ कोई. इतने लोगों के लिए I already have my 1 account. MSDN वाला सब्सक्रिप्शन है मेरे पास. We have 1 here. इतने पैसे काफी हो जाते हैं 1 महीने की प्रैक्टिस के लिए. So because what will happen, अगर सब लोग आप अभी बना लोगे, सबको 14,500 मिलेगा, बट वैलिडिटी एक ही महीने की मिलेगी और सब लोग उसको यूटिलाइज नहीं कर पाओगे. 1 महीने के बाद सबका एक साथ खत्म हो जाएगा. एंड देन कोर्स हमारा 1 महीने में खत्म नहीं हो रहा है. एंड 1 महीने के बाद हम हैवी रिसोर्सेस पे काम करने वाले हैं, राइट? सो डू नॉट क्रिएट ऑल ऑफ यू. वी हैव ऑलरेडी 1 अकाउंट. एक सिंपल कोई एक और अकाउंट बना के ग्रुप में पोस्ट कर दो दैट आई हैव क्रिएटेड अकाउंट. उसके बाद कोई मत बनाओ. अज्योर पे अकाउंट बना लो, आप लोग पोर्टल बना लो, ठीक है? पोर्टल पे अपना टेनेंट बना लो, यहाँ तक कर लो. डू नॉट परचेज योर सब्सक्रिप्शन. मैंने ऐसे अकाउंट हियर आई मीन सब्सक्रिप्शन मत परचेज करना. इसका 30 दिन का वैलिडिटी है. ये अकाउंट आपका लाइफ टाइम रहने वाला है अब, ठीक है? सो डू नॉट परचेज सब्सक्रिप्शन. सोनम हैज परचेज्ड ऑलरेडी. कोई एक और परचेज कर लो एंड दैट शुड बी इनफ. एंड देन आई विल शो यू कि आईडी वगैरह कैसे बनाना है, इसमें दूसरों को एक्सेस कैसे देना है. विल कवर दैट. एक्टिव डायरेक्टरी वाले कल वाले सेक्शन में कवर होगा थोड़ा बहुत वो, ठीक है गाइस? इज इट क्लियर? कुछ और डाउट है किसी को? दिस सेशन इज अबाउट टू फिनिश इन 1 minute. Sonam, you could stop sharing your screen if no one has any question. Anyone has any question, so let me know. Yes guys, any questions? No questions, Sohail bhai. Okay then, we'll stop it for today. Okay, no questions I see. So we'll stop it for today and we'll end the session. Tomorrow we'll discuss a bit of Active Directory, जहाँ पे मैं थोड़ा अपना ऑन प्रोमाइसेस वाला एक्टिव डायरेक्टरी को भी कवर कर दूंगा और यहाँ का एक्टिव डायरेक्टरी भी कवर करूंगा. एंड देन फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो विल स्टार्ट, आई थिंक कल फ्राइडे है, सो फ्रॉम मंडे विल स्टार्ट सब्सक्रिप्शन, एक्सेसेस, रिसोर्स वगैरह. दैट विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे. कल अगेन हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी को फिनिश कर देंगे, ठीक है गाइस? आई विल स्टॉप द सेशन एंड आई विल पोस्ट द रिकॉर्डिंग थोड़ी देर के बाद. And someone had problem accessing yesterday's recording, they can try it today. और नहीं हो रहा है तो they can download and then they can try it. वो अब हमेशा चलता है डाउनलोड होकर. Okay guys, I'll stop the session. Bye. Thank you.